Hello friends, today we are going to start with a new chapter. The name of our chapter is A Gift of Chhappals. Yes, you heard it right. It is Chhappals, the slippers that we wear. So, A Gift of Chhappals. This chapter is basically divided into two parts. The first part and the second part, if you will check your books. Now, the first part basically talks about a girl whose name is Mridu, and she lives with her Tapi and Tata. Now you must be wondering what is Tapi and what is Tata. Tapi is grandmother in Tamil. In Tamil we call grandmother as Tapi and Tata is grandfather. So what happens basically, Mridu lives with her grandparents. So one fine day, what happens, Mridu's grandmother asks and tells her that today we are going to your aunt's place, and the name of the aunt is Rukumani. So they are visiting Rukumani's place. So in the first part, you will see how the cousins get excited to see Mridu. They share their secrets with Mridu. This is what happens in the first part, and in the second part you will later on find Lalli learning violin from the music master and how the beggar appears. So our story is basically divided into two parts. So let's proceed forward, and before moving forward, I hope that the basic is clear to you, that Mridu is a girl and living with her grandparents, and now they are going to visit Rukumani, and these are the cousins of the girl, Lalli, Ravi and Meena. So let's start. Now what happens in the beginning? Now first of all, we are going to go into the chapter, but before this, just imagine that you are visiting your cousins, and what happens? Your cousins get excited to see you. So similarly happened with Ravi. Ravi got excited to see Mridu. So what Ravi did? Ravi pulled Mridu inside. Come, let's go. So this is the scene. What's happening in the scene? So Ravi pulled Mridu. Wait, let me take off my slippers. Now Mridu says that, why are you pushing me so fast? Let me take off my slippers. So Mridu takes out her slippers very neatly and keeps them aside, but while keeping her slippers, she notices. Now what she notices is very important. Now in the beginning, she does not pay much heed to it, but she notices these black slippers. You can see Mridu notices a pair of large black slippers with marks of toes. Now marks of toes shows that they are very old and they are very worn out. So these were the slippers, okay? So you just keep this in your mind that she saw some slippers, okay? This is what happened. So she did not think about whose slippers they were. She just went inside, kept her own slippers and went inside. Now let's see what happened next. Now her cousins Ravi and Meena, they were very excited. वो उसको एक secret बताना चाहते थे. They wanted to tell her a secret. Now the secret was about a kitten. Here is a kitten. You see that they have kept a kitten. So they were telling her the whole story कि उनके पास kitten कैसे आई और वहाँ पर कैसे आई. So a very small kitten lapping up milk from half coconut shell. You see that there will be a coconut shell. They were giving milk in that coconut shell. Meena and Ravi found it outside the gate mewing. They were telling her cousin Mridu that this morning we found a cat. That cat was mewing in the morning. So we took that cat inside. Now Meena tells Mridu that it's a secret. The way we cousins keep our secret, the same thing happened here. So now Meena is awareing Mridu and she's warning her, please इसको एक secret रखना. वो उसको ऐसे समझाती है कि secret क्यों रखना, because what will happen if Pati comes to know. Pati here is the grandmother. वो कहती है अगर मेरी grandmother को पता चल गया ना, वो पद्दू मामा के घर पर चले जाएंगे. So पद्दू मामा, now उनको ये एक warning मिली हुई थी उनकी तरफ से. So पद्दू मामा's house, if she knows we have a cat. So they were very afraid. So they kept a secret that they have a small kitten. Okay. Now this is the secret that they shared. Now what happened further? Now Ravi describes his problems. Ravi उसको बताता है मृदु को कि उसको कितनी सारी problems आती हैं एक kitten को रखने के लिए, उसको look after करने के लिए कितनी problems आती हैं. तो सबसे पहली बात जो रवि कहता है, he says that people always tell us to be kind to animals, but when we are, they scream, oh, don't bring them, that dirty creature here. Now what happens, ये आपके साथ भी ऐसा हो सकता है. Generally हमें हमारे parents और elders समझाते हैं that we should look after animals and we should be kind towards them. But जब भी हम देखते हैं, supposingly अगर आप एक stray dog को हाथ लगा रहे हो या फिर
हम उसको मिल्क डाल रहे हैं, या मतलब वी आर डूइंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, सो आवर एल्डर्स विल बी लाइक, ओ डोंट डू दैट, it is a dirty creature. So this was the first problem that Ravi was facing, while keeping that kitten. Okay, now the next problem Ravi tells us, it is also hard to get the milk. Now you will see in the next position that Ravi is struggling to get milk for the cat. Now what happens, Ravi wants to feed the cat, वो उसके लिए मिल्क लाना चाहता है, बट जैसे ही वो रेफ्रिजरेटर से मिल्क निकालता है, जिसकी ग्रैंड मदर होते हैं पाती, वो उसको देख लेते हैं, एंड पाती उसको सस्पिशियसली देखते हैं, लाइक ही इज होल्डिंग द ग्लास, एंड पाती उसको ऐसे देखते हैं कि आपने इस मिल्क के साथ क्या करना है. सो व्हाट हैपेंस, सो ही हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ द मिल्क टू थ्रो हर ऑफ द सेंट. नाउ हियर द वर्ड थ्रो हर ऑफ द सेंट मीन्स टू उनको पागल बनाना, उनको ऐसे अपीयर करना कि एक्चुअल में मैं दूध पीना चाहता हूँ. सो ही ड्रैंक सम ऑफ द मिल्क जस्ट टू शो दैट ही इज एक्चुअली ड्रिंकिंग द मिल्क एंड ही इज नॉट टेकिंग इट एनीवेयर. तो बट वो एक्चुअली में वो मिल्क था किटन के लिए, बट उसको पीना पड़ा पाती को ये दिखाने के लिए कि मिल्क किसके लिए है, वो खुद पीना चाहता है. सो पाती उससे भी ज्यादा क्लेवर थे. पाती ने क्या कहा, पी लो तुम सारा दूध पी लो एंड गिव मी द टम्बलर बैक. दिस इज व्हाट पाती सेड. सो अब नाउ रवि वॉज थिंकिंग कि अब मैं क्या करूँ, अब जो थोड़ा सा मिल्क रह गया है. सो रवि सेड दैट मैं इसको खुद क्लीन कर दूंगा पाती, ये जो टम्बलर है. एंड देन ही रश्ड आउटसाइड. तो उसने बाहर जाके क्या किया, वो सारा टम्बलर में जितना भी थोड़ा सा तो मिल्क रह गया था, उसने हाफ कोकोनट शेल में वो मिल्क डाल दिया. सो ऐसे ही वो अपनी प्रॉब्लम्स डिस्क्राइब कर रहा था कि कितनी उसको स्ट्रगल हो रही है, मतलब थोड़ा सा भी मिल्क किटन को देने के लिए और किटन को रखने के लिए, तो उसको बहुत सारी स्ट्रगल्स हो रही थी. दीज वर द प्रॉब्लम्स he was facing. So now he mentions this, these are the exact wordings of Ravi. Ravi says that now we have to think of some other way to feed Mahindran. This is the first time this word has been used in this chapter. He says Mahindran. Now Mahindran, this little kitty's name is Mahindran. Now Mridu was surprised. Mahindran, एक छोटी सी क्यूट सी किटी का नाम Mahindran कैसे हो सकता है? Now Mridu was surprised and also she was impressed कि जैसे एक रियल ह्यूमन बीइंग का नाम होता है, इन्होंने तो किटी का इतना अच्छा नाम रखा है. So what happened next? Ravi went into telling the story. अब रवि बताना चाहता था कि महेंद्र नाम के पीछे स्टोरी क्या है. सो रवि, आप आगे देखोगे कि रवि एक्सप्लेन करेगा कि कैसे उसका नाम उसने महेंद्रन रखा एंड एवरीथिंग. So we'll read it. It's a very real name. So she was very surprised with it. Now what Ravi does, Ravi tells the kitten's full name is. Now Ravi did not stop over there. वो महेंद्रन पे रुका नहीं, वो उसका पूरा नाम बताता है. वो कहते हैं इसका पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई. And he also says that you can call this kitty as MP पुन्नई in short. अगर आपको इतना बड़ा नाम लग रहा है, you can call this cat as MP पुन्नई. नाउ रवि इज वेरी हैप्पी अबाउट द कैट. वो अपनी, जैसे हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हम उसकी प्रेस करते हैं ना, सिमिलरली रवि तो मतलब अपनी किटन की बहुत प्रेस कर रहा था. नाउ यू विल फर्दर सी कि कैसे वो एक पल्लवा किंग्स के साथ रिलेट करता है, कैसे वो एंशिएंट कैट की इस तरह रिलेट करता है. वील सी इट ऑल. सो इट सेज दैट इट इज़ अ वेरी फाइन ब्रीड ऑफ कैट. मेरी कैट कोई ऐसी वैसी कैट नहीं है. रवि इज सेइंग दैट. सो नाउ उसके बाद अपनी कैट के उसके लिए और क्या बोलता है, रवि कंपेयर the fur of cat with lion's mane. What is mane? Mane is the neck, the hair that lion has on the neck. Now, so the Ravi is basically comparing the cat with the lion. So you see, he's so happy with the cat. And Ravi also questions Mridu about the emblem of ancient Pallava kings. So now वो क्या करता है, मृदु से क्वेश्चन पूछता है, क्या तुम्हें एम्बलम नहीं पता जो पल्लवा किंग्स का एम्बलम है, वो भी तो यही है. एंड देन मृदु गिगल्ड मीन्स लव. लाइक उसको लग रहा था कि रवि तो जोक कर रहा है, बट रवि वॉज सीरियस एंड वो अपने माइंड में इतनी स्टोरीज बना रहा था. सो मृदु गिगल्ड. नाउ व्हाट हैपेंस इज ही मेंशंस दैट हैव यू एवर बीन टू महाबलीपुरम. वो वहाँ पर फिर अपनी सारी स्टोरी बताता है जब वो अपने एक स्कूल ट्रिप के लिए महाबलीपुरम गया था. नाउ दिस इज वेरी फनी ओवर हियर दैट ही टेल्स दैट ही सॉ अ स्टैचू. अब स्टैचू में उसने क्या देखा, दिस इज द एग्जैक्ट टेक्स्ट व्हिच ही सेज दैट थातास 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 एटसेट्रा एटसेट्रा. नाउ ही मेंट टू से दैट ये बहुत एंशिएंट है. जैसे हम बोलते हैं ना, इसकी मतलब इसके ग्रैंडफादर की ग्रैंडफादर की ग्रैंडफादर की ग्रैंडफादर. सो वो इस तरीके से रिलेट कर रहा था. सो ही मेंशन दैट थातास थातास थातास. सो बेसिकली द फैक्ट इज
Ravi was trying to mention that Mahindran is a descendant from that very ancient cat. Again you see he's just praising his cat again and again. So Ravi ने conclude क्या किया? Ravi concluded that this cat is a descendant from a Mahabalipuram rishi cat. अब उसने बोला कि एक ऋषि cat है, ये तो उसकी descendant है. So this is all what he was saying about his cat. Now what happened further? अब जो मीना और मृदु थे वो ऐसे खड़े हुए थे और वो उसकी सारी बातें सुन रहे थे. एंड यू नो हमारे साथ भी ऐसा होता है जब हम किसी की बातें सुन रहे हैं और हमें लगता है कि क्या बोली जा रहा है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है. तो मृदु और मीना ने क्या किया, उन्होंने एक्सचेंज की लुक्स कि व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट लाइक दैट. सो उन दोनों ने एक दूसरे से पूछा व्हाट डज दिस हैव टू डू विद एनीथिंग, इसका कुछ लेना देना भी है पूरी स्टोरी के साथ, ही इतनी प्रेज करी जा रहा है अपनी कैट के साथ. मृदु डिमांडेड, मृदु ने पूछा is there any relevance? So this is what Ravi said. I am telling this cat is a descendant from Egyptian cat god. अब वो cat god पे पहुंच गया. No, goddess. That was he said, bastard. Yeah, that's it. So this is where he ended praising his cat. Okay. Now let's see what happened further. Now what happens in the next scene? यहाँ पर क्या होता है? There is a sound. Like a very weird sound, a creaking sound. So Mahindran looked up, alarmed. Alarmed means he was alerted. The kitten, okay? Mahindran is the kitten. He was sharpening his claws on the edge of coconut shell. In the beginning, we read that the kitten was served the milk in the coconut shell. Now उन्होंने half coconut shell में उसको milk serve किया हुआ था. So the kitten was basically sharpening the claws. Creech, एकदम ऐसे से sound आई. A weird sound came from the window. Mridu was startled. Startled means surprised and amazed. So, and the kitten was also frightened, okay? But the creaking sound did not stop. And Mridu asked surprisingly, what's the noise? Now, in this sound, what happens? They were all talking about the kitten and suddenly एक noise आ जाती है. And suddenly ऐसी एक noise आ जाती है and Mridu is, you know, you are at somebody's place. So, Mridu asks, what's the noise? ये ऐसी कैसी आवाज़ आ रही है? So उसके बाद Ravi and MP Punai was also frightened. Before Ravi tells Mridu about that this is Lalli who is playing the violin, what happens is after listening that creaking sound, MP Punai, again the kitten Mahindran, was frightened. He bounced on the tray of red chilies trying to hide beneath. He tipped a few chilies over himself. Now what happens? Kitten is a small creature, right? अब उसको एक suddenly ऐसी sound आएगी तो kitten क्या करेगी? भागेगी. So similarly Mahindran भागी और उसने क्या किया? ट्रिप कर गई. वहाँ पे एक ट्रे पड़ी थी रेड चिलीज की और उसके ऊपर वो गिर गई. मतलब वो अपने आप को हाइड करने की कोशिश कर रही थी. Meow. He hauled miserably means he cried. Okay, that's what happened. Now Ravi tells to Mridu. Mridu asks ना कि ये कैसी सी आवाज़ है. So Ravi tells that that's Lalli learning to play violin. This is the third cousin who's coming into picture. Lalli who's trying to play violin, learning to play violin. So he compares master's singing like a train whizzing on and on with Lalli's train is derailing. Now here what happens in the story is रवि कहता है कि जैसे मास्टर है ना, मास्टर की सिंगिंग तो ऐसी है जैसे ट्रैक पे वू करके ट्रेन चलती है, ओके. बट जो अब लल्ली की ट्रेन है वो तो कभी रेल पे आती नहीं है. सो दैट इज वाई द वर्ड इज यूज डीरेलिंग. द ट्रेन इज ऑलवेज डीरेल्ड. कभी रेल पे आती नहीं है तो वूप करके चलने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है. इट्स नो क्वेश्चन. सो दिस इज व्हाट हैपेंस and this is where the first part of the chapter ends.